Hello and welcome to the YouTube channel of RankersBuzz. Today we are again here with a new session, and this is a new series in which we will discuss about the landmark judgments of the Honorable Supreme Court of the year 2022 and 23. So in this series, we will continue to discuss about the different landmark judgments in many upcoming sessions like this. And today also we will discuss about two different important landmark judgments of the 2022. So let's start with the judgment, the first judgment that we are going to discuss here. So before we start with the first judgment, let's take a look कि क्या actually situation थी जो इसमें arise हुई है. तो the first case in that we are going to discuss here is related to the the recognition of the sex workers as the profession. कि भाई ये जो है ये भी एक प्रोफेशन की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए, इसको लेके जो है यहाँ पे ये स्पेसिफिक जजमेंट आया था. और क्यों आया था? क्योंकि हमने देखा है और कई सारे इंस्टांसेस ऐसे हुए हैं जहाँ पे कि जो इस प्रकार का काम करते हैं उसको बहुत ही इनह्यूमन तरीके से लोगों द्वारा ट्रीट किया जाता है. एंड सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया कि भाई जो ये लोग हैं तो ये भी ह्यूमन बीइंग. ऐसा नहीं कि इनका बस काम अलग है तो फिर ये जो है ह्यूमन बीइंग नहीं है. दे आर ऑल्सो ह्यूमंस एंड दे ऑल्सो दे मस्ट बी गिवन द डिग्निटी विच दे विच दे हैव अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. जो इनको राइट्स मिलते हैं वो राइट्स अभी इनको भी मिलने चाहिए. और इसी को लेके ये जजमेंट जो है आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है. So let's see what is the name of this particular judgment. So if we look at the name, then the name of this particular judgment is the Budhadev Karmakar Budhadev Karmakar versus State of West Bengal, State of West Bengal 2022. So we will talk about this particular judgment which has came from the Honorable Supreme Court, and this case was heard by the bench of on a Supreme Court bench in which the judges were it was Justice L. Nageshwar Rao, it was constituted of the B.R. Justice B.R. Gavai, Justice B.R. Gavai, and Justice A.S. Bopanna. So it was a 3-judge bench decision which was pronounced in this particular judgment. And as I told you, the concern in this case was with respect to the sex workers who used to work in a area, in a red light area of the West Bengal, Kolkata. So they used to work there, and one fine day, what happens that in one of the red light areas, in one of the brothels, one person goes there and assaults a worker there, assaults the worker, and due to that assault, and this assault was of such nature that that sex worker dies in consequence of that. तो वहां पे जो है उसकी डेथ कॉज हो जाती है उसके मारने की वजह से, जिस वजह से कि ये केस जो है वो इस तरीके से चलकर सुप्रीम कोर्ट के सामने भी आता है कि भाई जो स्टिग्मा अटैच्ड है इस काम के साथ, क्या उनको जो है एक ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करने की भी जो है जो परमिशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता है, या फिर उनके पास भी वही राइट है, राइट टू लिव लाइफ विद डिग्निटी, जो कि आर्टिकल 21 में दिया गया है. इन सब चीज़ों पे यहाँ पे जो है कोर्ट बात करता है और कुछ गाइडलाइंस भी यहाँ पे इशू करता है. तो जैसा कि मैंने बताया कि भाई एक किसी की डेथ हो गई, इसके जो पर्सन था वहां जा रहा था, क्योंकि बात यह है कि यहाँ पे जो बात निकल के आती है कि जो बाकी लोग हैं जो इनके अलावा जो यहाँ पे जाते हैं, दे
think that these people are not human beings but the commodity. ये कोई सामान है जिसको कि they can use and they can do whatever they want if they are paying or giving something in return of that. तो they try to use them as a commodity, जो कि बहुत ही गलत चीज यहाँ पे निकल के आई, जो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे देखा। और फिर सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे कहना था दैट दे ऑल्सो हैव द फंडामेंटल राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 एंड दैट इज वाई इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि भाई ये जिंदा है या हम इसको लाइफ दे दें, सिर्फ ये इसका मकसद नहीं है आर्टिकल 21 का। when we see article 21, then it is not mere existence like animal, mere existence like an animal। आप जो है सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग जो है वो एक एनिमल की तरह सिर्फ एग्जिस्टेंस जरूरी नहीं है कि वो जिंदा रहे। इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट दिस एग्जिस्टेंस must be associated with the dignity. Every individual has the right to live with the dignity. Dignity is a very important part of anybody's life, who is a human being. तो ये बहुत ही जरूरी चीज है जो जो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट पॉइंट आउट करता है। और इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे इस तरीके का काम जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको कहता है दैट इट इज अ प्रोफेशन। ठीक है, बिकॉज इट इज नॉट डन, ये जो किया जा रहा है इट इज नॉट out of any kind of enjoyment, not out of enjoyment or pleasure, but it is done for the mere existence. Why they are doing it for the existence। वो अपनी जिंदगी चलाने के लिए उस काम को कर रहे हैं, और जब भी कोई अपनी जिंदगी को रन करने के लिए अगर कोई काम कर रहा है तो उसको प्रोफेशन कहा जा सकता है, इवन दो वो कोई भी किसी प्रकार का काम हो। और इसके अंदर साथ ही जो है उनको यहाँ पे UIDIA को भी डायरेक्शन दिए जाते हैं कि भाई जो लोग हैं, कई बार जो होता है इनको पब्लिक जो सरकार की तरफ से जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पाती हैं। क्यों नहीं मिल पाती हैं? क्योंकि कई बार इनको जो है इनका कोई एड्रेस ना होने की वजह से, इनको जो है स्थायी एड्रेस ना होने की वजह से इनको जो है आधार कार्ड इशू नहीं किया जाता। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यह भी कहा दैट this authority UIDI must issue Aadhaar cards to these people because this is their right। ठीक है, इसका इनको राइट है, और इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो उनके पास पावर है आर्टिकल 142 के अंतर्गत, जहां पे सुप्रीम कोर्ट इस तरीके का पावर का इस्तेमाल कर सकती है, उसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर जो है UIDI को भी साथ साथ दिया। और साथ ही ये भी कहा कि भाई इनके रिहैबिलिटेशन के लिए भी आपको जो है काम करना चाहिए। जो सरकार है दे मस्ट वर्क फॉर द रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन के ऊपर काम करना बहुत ही जरूरी है बाय द गवर्नमेंट, और इसके लिए कुछ चीजें बोली जाती हैं, कुछ यहाँ पे डायरेक्शंस, कुछ सजेशंस जो है यहाँ पे दिए जाते हैं, कुछ डायरेक्शंस दी जाती हैं। कहता है कि भाई अगर कभी किसी प्रकार की कोई रेड की जाती है किसी ब्रॉथल के ऊपर, व्हेनेवर अ रेड हैज बीन मेड, द सेक्स वर्कर्स वर्किंग देयर, जो भी वहां पे कंसर्न्ड है, दे नॉट टू बी अरेस्टेड और पीनलाइज्ड, किसी प्रकार की सजा नहीं, और हैरेस्ड और विक्टिमाइज, उनको किसी प्रकार से भी उत्पीड़न नहीं करना है आपको, ऐसी यहाँ पे जो है हिदायत दी जाती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। साथ ही दूसरी चीज जो कोर्ट कहता है दैट जब भी इस तरीके के हो, दे मस्ट बी ट्रीटेड विद डिग्निटी। पुलिस मस्ट ट्रीट देम विद डिग्निटी। डिग्निटी के साथ उनको जो है ट्रीट करना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद जो अगली यहाँ पे गाइडलाइन जो इशू करता है, उसके अंदर जो है ये की जाती है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। और इसके अंतर्गत कहा जाता है कि भी एप्रोप्रिएट गाइडलाइंस बनाई जाए। इनको कहते हैं कि आप कुछ गाइडलाइंस बनाइए जिसके तहत ये हो कि जब भी कोई इस तरीके की रेड या फिर कोई भी इंक्वायरी या कुछ भी किया जाता है तो इनकी आइडेंटिटी को एग्जैक्टली रिवील ना किया जाए। जो इनकी आइडेंटिटी है, दिस आइडेंटिटी मस्ट नॉट बी पब्लिश्ड
इसको नॉट टू बी पब्लिश्ड, आप इसको जो है ना ही पब्लिश करें और ना ही टेलीकास्ट करें। सो एक ये डायरेक्शन देता है। देन अनदर थिंग बात करता है दैट देयर हेल्थ एंड सेफ्टी मस्ट बी टेकन केयर ऑफ, health and safety must be taken care of, and this must be provided by the government. Okay, this must be provided by the government. और जो भी अगर इसको for the health and safety, if they are having certain things in their possession, some medicines or some protective items, then that must not be treated as a offense, उसको जो है offensive तरीके से ना लिया जाए पुलिस के द्वारा। एंड साथ ही साथ एक और चीज यहाँ पे जो है सरकार को हिदायत देता है। Here again, it says to the government that both government, either it is state government और सेंट्रल गवर्नमेंट, इन दोनों की ही जिम्मेदारी है कि they must arrange certain kind of workshops for telling them or educating them कि भाई क्या सही है, क्या करना चाहिए अबाउट द हेल्थ एंड अबाउट देयर राइट्स, एजुकेटिंग अबाउट their rights. So they must also be informed about their rights, that what are their rights and how they can use those rights for their dignified life. So this is what was discussed in this particular judgment. So what is the importance of this judgment and how it can be asked in any examination? Then it can be asked, maybe the name of this judgment may be asked, or the judgment name can be given and it can be asked that what was decided. So here they have been recognized, and it is said that it should be treated like a profession. इसको जो है आपको प्रोफेशन की तरह ट्रीट करना चाहिए, and they must be treated as a dignified human being as they are protected under Article 21 like any other citizen of India or any other human being. ये भी जो है उसके अंदर ट्रीट किए जाते हैं। और जब हम आर्टिकल 21 की बात करते हैं, इट इज नॉट इवन लिमिटेड टू द सिटीजन्स, इट इज अवेलेबल फॉर ऑल दी ह्यूमन बींग्स, सभी के लिए जो है ये एप्लीकेबल होता है, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो ओवरसीज किसी और देश से आए हो। आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लाइफ की बात करता है वो सभी के लिए है। इट इज अ यूनिवर्सल राइट, इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू द सिटीजन और सम कैटेगरी ऑफ सिटीजन, सो दैट इज व्हाई दे आर आल्सो कवर्ड अंडर this and they have been given protection. So this was about this particular judgment, that is Budhadev Karmakar versus State of West Bengal. Now we come to the next judgment that we are going to discuss today. So when it comes to the next judgment, so this judgment is related to the the economically weaker section reservation, which was given, like 10% reservation which was given. So this particular judgment is with respect to the EWS reservation, because it was opposed by many people कि भाई on the basis of economy, no such provision is there in the constitution that only based on economy you cannot give any kind of reservation. And secondly, it was well settled after the Indira Sane judgment that the 50% ceiling of the reservation must not be ब्रोकन। जो ये सीलिंग है 50% की भी, 50% से ज्यादा टोटल जो है रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, ये जो है ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। कि 103rd अमेंडमेंट के द्वारा, 103rd अमेंडमेंट एक्ट अगर हम देखें तो इसके तहत जो है 10% रिजर्वेशन दिया गया था टू दी EWS, और इसी को लेके जो है यहाँ पे ये पर्टिकुलर जो है केस यहाँ पे सामने आया जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और हालांकि इस केस में जो डिसीजन आया वो डेफिनेटली इसको अपहोल्ड किया गया और कहा गया कि यस, इट वाज विद इन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट टू हैव सच अ लॉ। तो ये चीज यहाँ पे की गई, दैट इज व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस मे कम इनटू any of the examination, it may be a law related examination or for that matter any other examination, this can definitely come. So let's see what is the name of this judgment. So if we look at the name of this judgment, then it says
It is Janhit Abhiyan versus Union of India. Janhit Abhiyan versus Union of India 2023. Oh, sorry, 2022. So this is another important judgment that we need to discuss. So this judgment was, this case was actually heard by the Chief Justice of that time, that is the UU Lalit. Sorry. It was heard by Justice UU Lalit, that CJI of that time. And then we have Justice Dinesh Maheshwari. Justice Dinesh Maheshwari. Then we have Justice S. Ravindra Bhatt. Then we also have Justice Bela M. Trivedi. And we also have Justice J.B. Pardiwala. So this was the 5-judge bench, constitution bench. It was a constitution bench comprising of 5 judges. It was constituted to hear this particular case, that is with respect to the 103rd Amendment Act, which was brought by the government and passed in the parliament. So basically इसके अंदर challenge किया गया था, challenged 103rd Amendment Act was challenged in this particular case. इसके अंदर जो है यहाँ पे challenge किया गया और इसके अंदर कहा गया कि भाई जो रिजर्वेशन है इट इज नॉट एन एंड, कहता है भाई ये कुछ ऐसा नहीं कि एंड है, बट इट इज जस्ट अ मींस टू सिक्योर सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। कि भाई आखिर रिजर्वेशन क्यों होता है? तो रिजर्वेशन का मकसद ये होता है कि भाई इट इज बेसिकली अ मींस टू सिक्योर सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। इसका बेसिकली काम यही है और इसी को लेके जो है यहाँ पे 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है उसको पास किया गया। इसके अंदर की जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उसको यहाँ पे जो है रिजर्वेशन का प्रोविजन दिया गया। एंड दिस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो था वो होना चाहिए था, कहाँ से होना चाहिए, मतलब जनरल कैटेगरी। only the general category people will get this benefit of the EWS, that is economically backward classes. And this was challenged before the Honorable Supreme Court. Why? Because it was said that when we fix this thing, ki EWS category that is of 10% reservation will only be given to the general category. So it was argued that this is violation of Article 14, which talks about the equality. And how to understand this, ki if suppose if somebody from any other category for that matter wants to lift his own category of thing and want to jump to the general category, and now he is also very poor, then why he or she should not be considered under this 10% quota? So that was challenged under Article 14. इस बात को challenge किया गया, why it is limited to the general category. If somebody from any other category want to go to the EWS category by renouncing its own benefit, अपना benefit छोड़ के अगर इसमें आना चाहे, तो why it is so discriminated? Because economy should not be concerned with the caste. If you are basically talking about economy, then how can you relate it with the caste? It can be given to anyone. So this was challenged before the कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कि भाई, और एक और चीज कही गई कि सबसे पहली बात कि आज तक कभी रिजर्वेशन जो है वो मेनली ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी
इट कैन नॉट बी गिवन, कि भाई इकोनॉमी के सिर्फ नाम पे जो है रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता, एक ये भी यहाँ पे आर्गूमेंट निकल के आया। साथ ही यहाँ पे जैसा मैंने आपको पहले बताया, अनदर आर्गूमेंट विच वाज मेड विद रिस्पेक्ट टू दी 50% सीलिंग, 50% की जो सीलिंग है कि भाई इससे ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जाना चाहिए, जो कि पहले हमारा इंदिरा साने जजमेंट में भी डिसाइड हो चुका है। जो इंदिरा साने जजमेंट है हमारा, उसके अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई रिजर्वेशन आप दे सकते हैं, बट इट शुड नॉट गो अबव 50% ऑफ सीलिंग, 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। हालांकि इस अगर हम जजमेंट की बात करें तो एज आई टोल्ड यू, इट वाज अ 5 जज बेंच डिसीजन in which the decision came in favor of the government with 3:2 ratio. 3 was is in the favor of the 103rd Amendment Act and 2 were in the opposition or dissenting. So 3 was the majority and 2 was the dissenting judges here. So basically, if we talk about the dissenting people, then it was the Justice Bhatt, Justice Bhatt इधर थे, and Justice UU Lalit, the Chief Justice of India. They were in the dissenting position. They had the dissent over this particular judgment. लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, the 5 judges की bench थी, 3 were in the favor of this. So 103rd Amendment Act was upheld. इसको जो है वहां पे upheld कर दिया गया इस particular judgment में. So what we take out of this particular judgment, अगर हमसे वहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है तो किस तरीके का पूछा जा सकता है, तो ये पूछा जा सकता है दैट इन विच जजमेंट और इन विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट दिस 103rd अमेंडमेंट एक्ट वाज अपहेल्ड, कि भाई किस में जो है अपहेल्ड किया गया था 100. सो दिस इज द आंसर, दैट इज जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022. एंड दिस कैन बी रिवर्स्ड एंड कैन बी आस्क्ड दैट कि भाई इस जजमेंट के अंदर क्या डिसाइड हुआ था, एंड दे विल गिव यू मे बी गिविंग यू सम ऑप्शंस लाइक 103rd अमेंडमेंट एक्ट, 102nd अमेंडमेंट एक्ट, 105th अमेंडमेंट एक्ट. सो इट इज दी नथिंग बट इट इज 103rd अमेंडमेंट एक्ट जो यहाँ पे चैलेंज किया गया था. तो आई होप यू ऑल हैव गॉट दिस पॉइंट. जो यहाँ पे बेसिक आइडिया था, I have not gone into very, because these are very big judgments of, such big benches like constitution benches. But this is how the question can be asked in your exams, and it will be helpful for all the students who are preparing for any kind of examination, because when it comes to the judgment and especially the landmark judgments, they are not limited to the law examination. Such judgments are not limited to the examination. They can be asked in any of the law related examination. They may be asked in the UPSC, they may be asked in the SSC, or for that matter any other examination. And for the general knowledge also, you can just go through these judgments. They will be very helpful in upgrading your knowledge. So I hope you all have understood, and in the coming session we will come up with more such more such judgments which are very landmark, very important from the year 2022-23 session, and they will definitely help you out in the upcoming examination, either it is any entrance examination of the law, or for that matter, as we know, the UPSC is going to come very soon, so it will be helpful for those people also. So please सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट यू कैन गेट मोर अपडेट्स अबाउट इट, कि जब भी आने वाला होगा तो आपको पहले से पता चले, नोटिफिकेशन आ जाए जब भी हम इसके अंदर सेशन कर रहे हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय एवरीवन.